Hello student, today I am going to discuss the topic servlet and session tracking. It is a very good topic to understand what is the server program. And basically this topic is from subject web technology KCS 602 and this is from 6th semester AKGEC syllabus. So now going to start the servlet and session tracking video. Now first of all you understand what is the servlet. Servlet is basically a program and it will run at the server side. So therefore we calling as a servlet server program. और अगर आपको ये प्रोग्राम बनाना है जावा लैंग्वेज में तो आपको दो पैकेज की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. पहला है JavaX Servlet, JavaX.Servlet, दूसरा है JavaX.Servlet.http. तो ये दो पैकेज आपको पता होने बहुत ज़रूरी है अगर आपको एक सर्वलेट जावा का प्रोग्राम बनाना है. So first we understand what is the basic job of the servlet server program. So it will take the data from client. So when you run the servlet program, it will run in the browser. So client will send the data with the help of the project to the servlet. And with the help of explicit data, it also will take the implicit data. यानी there are some data which is not visible to you, आपको नहीं दिखेगा. वो डेटा इंटरनल हेडर होता है जो कि सर्वलेट पे जाएगा जैसे ही आप कोई डेटा सर्वलेट पे सेंड करते हैं. उसके बाद सर्वलेट उस आपके डेटा को रिसीव करने के बाद रिजल्ट्स कंपाइल करता है, देन सेंड द एक्सप्लिसिट डेटा बैक टू द क्लाइंट एज वेल एज इम्प्लिसिट डेटा आल्सो. सो बेसिक अगर आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे तो सर्वलेट प्रोग्राम क्लाइंट से डेटा को रिसीव करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को जो रिजल्ट होता है उसको वापस करता है क्लाइंट के पास यानी ब्राउजर पे. सर्वलेट प्रोग्राम बनाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है. सो तीन इम्पॉर्टेंट मेथड हैं सर्वलेट प्रोग्राम में जिसको हम लाइफ साइकिल बोलते हैं. पहला मेथड है इनिट प्रोग्राम, दैट इज इनिट मेथड. तो दिस मेथड इज बेसिकली इज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सिर्फ एक बार रन होता है, इट रन्स ओनली वंस. उसके बाद जो बेसिक मेथड है दैट मेथड इज कॉल्ड द सर्विस मेथड एंड दिस इज द मेन मेथड इन विच ऑल योर रिक्वेस्ट विल रिसीव एंड इट विल बी प्रोसेस्ड. And if you are not using the service method, then there are the other methods are also available like do get method, do post method, and do other methods are also available. If you have the knowledge of HTML program by sending the data to the server, so जब हम HTML प्रोग्राम में फॉर्म मेथड को यूज करते हैं तो उसमें आपको मेथड दो तरीके के मेथड होते हैं, गेट होता है, एक पोस्ट होता है. तो अगर आप गेट मेथड से डेटा सर्वलेट पे भेज रहे हैं तो उस केस में आप डू गेट मेथड का यूज करेंगे, और अगर आप पोस्ट मेथड से डेटा को सर्वलेट पे भेज रहे हैं देन यू विल यूज द डू पोस्ट मेथड. नाउ सर्विस मेथड कैन बी कॉल मेनी टाइम्स बिकॉज सर्वर विल रिसीव द क्लाइंट रिक्वेस्ट मेनी टाइम्स, सो सर्विस मेथड कैन बी कॉल मेनी टाइम्स. When your work has been done, then it will call a destroy method. Again, it will call only one time. And it will delete the servlet instance. So there are three important method in servlet life cycle. The first one is init for initialization purpose. Second is service, it will call multiple times, and third one is destroy. Now understand a basic servlet program just to display the hello world in the browser. So first of all, you need to create a Java class. I already told it is a Java program. So you need to create a Java class here. So Java class, name of this class is hello world. Now make this Java class as a servlet program. Then you have to extend it. इसको एक सब क्लास बनानी पड़ेगी. तो ये hello world एक सब क्लास हो गई, उस सुपर क्लास है HTTP servlet. तो जब आप किसी भी क्लास को सब क्लास बनाते हैं HTTP सर्वलेट सुपर क्लास से तो उस सो वी कॉल एज ए हेलो वर्ल्ड. तो हेलो वर्ल्ड एक सर्वलेट प्रोग्राम है बिकॉज वी हैव एक्सटेंडेड HTTP सर्वलेट.
अब HTTP सर्वलेट से जब हम एक्सटेंड करते हैं तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू इंक्लूड द पैकेज इन योर प्रोग्राम. सो देयर आर टू पैकेजेस आर इंक्लूडेड हियर. वन इज or you can say java.io and second is javax.servlet. These two packages are included. Now next job is to display something on the client web browser. So first of all we have to create an object. The name of the object is out and it is of type print writer. Print writer is predefined class. और ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए आपको एक ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा रिस्पॉन्स, और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है. डू गेट मेथड विल टेक टू पैरामीटर. वन इज फॉर रिक्वेस्ट टू रिसीव द डेटा फ्रॉम द क्लाइंट. सेकेंड इज रिस्पॉन्स टू गिव द डेटा बैक टू द क्लाइंट. Request is the object of HTTP servlet request and response is the object of HTTP servlet response. So इसी ऑब्जेक्ट का हम यूज करके एक आउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसका टाइप होगा प्रिंट राइटर, और यहाँ हमने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का गेट राइटर मेथड कॉल किया है. दैट मेथड विल रिटर्न द एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रिंट राइटर. नाउ वी हैव द ऑब्जेक्ट टू डिस्प्ले एट द क्लाइंट मशीन. तो बहुत सिंपल सा है, आप आउट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद जस्ट यूज द println एंड गिव द मैसेज. व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम, द प्रोग्राम विल डिस्प्ले द हेलो वर्ल्ड एट द ब्राउजर at the client machine. So it is a very simple program. There are three important parts in this program. First part is to import the package. Second part is to create the class, which is a subclass. And third part is to use the out object to display anything at the client browser. Now I'm running this program in the NetBeans, जिससे कि आपको लाइव पता चले कि प्रोग्राम को कैसे आपको कंपाइल करना है और रन करना है, खासकर सर्वलेट प्रोग्राम को. इसके लिए मैं NetBeans का यूज करूंगा. NetBeans इज एन IDE. सो ऑलरेडी मैंने NetBeans यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, और एक हमने इसको ऑलरेडी एक प्रोग्राम बना रखा है. मैं आपको बस एक सिंपल आइडिया देता हूँ कि प्रोग्राम को रन कैसे करना है. ये हेलो सर्वलेट प्रोग्राम है. इसको रन करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि इसमें प्रोग्राम यानी प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट यू गो टू द फाइल, देन क्लिक ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, सेलेक्ट द जावा एंड सेलेक्ट द जावा एप्लीकेशन एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट. एंड फॉर एग्जांपल इट इज जावा एप्लीकेशन 7 and you finish it. And now you can see this is the Java application 7. We have the source package and one application has been created, Java application.java. Okay, now basically we want to work on Servlet. So what you have to do, select the source package, right click, go to the new and यहाँ पे आप Servlet को सर्च करिए. अगर आपको यहाँ पे Servlet नहीं दिख रहा है तो others पे जाइए, others पे Java पे जाइए, ठीक है, और यहाँ पे आप Servlet को सर्च करिए. Some problem in this IDE is getting Java class, Java applet, main class. Okay, folder Java class package Java like mail. Okay, so what we do, we have already created a project, so we will run this project directly. So we have a hello servlet.java program is already there. Here you can see one message is already mentioned, out.println what is the doc type, and it will display hello world, hello servlet message here. So how will you run this program? Hello servlet, right click and run the file. So this is the URL. So it is displaying servlet, hello servlet at Servlet basic. Basically this is the name of the project. So you can close this browser. Now we are making some change here, like you can delete all the option here and just out.println. Here you can write hello AKGEC. Okay, and now you can run the program.
Now you can see hello AKGC already mentioned here. Okay, it is some default information which is displaying. You can remove this default information program. So hello AKGC is mentioned, whatever is mentioned. You want to display it in the next line. So you can use HTML code here in the file. So you can see hello sir, hello AKGC is mentioned. So this is a very simple servlet program just to display the hello. And just I'm telling you the structure of this NetBeans when you are running this servlet program in the NetBeans. तो इसका क्या कैसे आपको इसको समझना है। यहाँ पे जैसे ही आप सर्वलेट सेलेक्ट करते हैं तो ये बहुत सारे पैकेजेस इंपोर्ट हो जाते हैं, ऑलरेडी इंपोर्टेड हैं। और जो मैंने आपको पीपीटी में बताया है, पीपीटी में बताया है कि आपको जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट स्टार इंक्लूड करना है, लेकिन जब आप नेटबीन्स पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी जावा एक्स डॉट सर्वलेट जो बेसिक मेन क्लासेस हैं उसको ऑलरेडी इसने इंपोर्ट कर रखा है। Then it is the hello servlet, it is the name of the class, and वहाँ पे मैंने आपको सर्विस बताया था। जब पीपीटी में जाएंगे, लाइफ साइकिल पे जाएंगे तो मैंने आपको सर्विस बताया था, लेकिन नेटबीन्स में सेम सर्विस जो मेथड है उसका नाम है प्रोसेस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे प्रोसेस रिक्वेस्ट है नेटबीन्स पे, एंड जो आपका मेन लाइफ साइकिल है सर्वलेट का, वहाँ पे उस सर्विस का नाम है सर्विस। ओके, so yeah, that depends upon id to id, some small changes may be there. So we have the request object, we have the response object. There are two parameters in this service method, or you can say process request method, and we are using here, and we already created the out object as I explained in my ppt. We have created an out object, and there are two objectives in the do get method, request and response, and here we are using the process request. Okay, so when you run this program, the program will run. There are other methods are also available. We have a do get method, so you can do the same program in do get also. So when you pass the value with the help of do get, then it will call the do get method, and basically it will call the process request method. Okay, so I discuss about what is the hello world program, and I explain how to run the hello world program. Next, in this hello world program, you can also use the HTML code. So if you are using HTML code, then you can mention which type of information you are going to display at the client side. For example, it is again a simple program of Servlet. So यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया response dot set content type text and HTML, यानी कि ये जो डेटा है वो HTML के फॉर्मेट में भी आप भेज सकते हैं क्लाइंट साइड पे। अब यहाँ पे out.println you can write full HTML program. You can see HTML है, यहाँ पे टाइटल दिया है, बैकग्राउंड कलर हमने मेंशन किया है, H1 भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो H1 टैग में हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। So here objective of this PPT of this program is we can include the HTML tag also in this out.println. Next I'm going to compare the Servlet with the CGI. तो Servlet से पहले हम लोग CGI यूज करते थे, अब CGI और Servlet में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। CGI का मतलब है कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI also a type of program that will run at the server side. So in case of CGI, client एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर CGI स्क्रिप्ट को क्रिएट करता है, उसके बाद स्क्रिप्ट कंपाइल होती है, रिजल्ट आता है और रिजल्ट बैक टू द सर्वर पे जाता है। देन सर्वर उस रिस्पॉन्स को क्लाइंट पे रिटर्न कर देता है। तो यहाँ पे जब आप देख रहे हैं कि जैसे ही स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है वो डिसअपियर हो जाती है, दैट इज डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब फिर से कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है तो फिर से आपकी CGI स्क्रिप्ट क्रिएट होती है। तो हर एक रिक्वेस्ट पे CGI स्क्रिप्ट क्रिएट होती है, और जैसे ही रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है CGI स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन केस ऑफ सर्वलेट वी कैन सी, जैसे ही क्लाइंट एक रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, सर्वर सर्वलेट को क्रिएट कर देता है। सर्वलेट जो है
आपके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। मीनिंग इज कि वो जो है डज नॉट क्विट, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। सबलेट सीजीआई के केस में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सबलेट के केस में डिस्ट्रॉय नहीं होता, और वो रिजल्ट क्लाइंट को रिटर्न करता है। जैसे ही दूसरा क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है सर्वर पे, देन सर्वर विल क्रिएट द यूज द सेम सबलेट टू गेट द रिजल्ट बैक। तो सबलेट के केस में हर एक रिक्वेस्ट में सबलेट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सीजीआई के केस में हर एक रिक्वेस्ट में सीजीआई डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीजीआई एंड सबलेट, यू कैन सी। Therefore, after the CGI, we are using the sublet because when a sublet has been created, it will stay there to process the multiple client requests. When all the client requests has been processed, then you can destroy the sublet. In case of CGI, for each request, CGI script has been created, and when the request is complete, CGI script will be destroyed. So you can see it will take more time to process the request for the CGI, and sublet will take less time to process the request of the client. Now that I already discussed what are the advantage of this using the sublet over CGI. So running a sublet doesn't require creating a separate process each time. Sublet stays in memory, so it does not have to be reloaded each time. There is only one instance handling multiple requests, not a separate instance for every request. Next, we are understanding the package. If you are going to use create the sublet program, so we must know the package name. For creating a sublet of HTTP, we are using HTTP sublet. We are using HTTP sublet here. And for creating the sublet of generic sublet, we are using generic sublet. Both are different. Generic sublet is protocol independent. HTTP sublet is only for the HTTP protocol. Now there are detail of some important methods that I already discussed in sublet lifecycle. One of the important method is init. It will take one parameter and of type sublet config. So when you want to initialize some variable, then we are using these parameters. And then I discuss about response. Response is the method and it will take two parameter. One is request to get the value from the client, and second is response to give the result back to the client. Service calls another method depending on the type of the service request. So if you using the get method, it will call the do get. If you are using the post method, it will call the post method. Then when sublet shut down, it will call the destroy method. Destroy is called only once, and it is must be thread safe. Obviously, we need to take care for if you are using the multi-threading concept. So this is the detailing of three important methods: init, service, and destroy. Next, superclass is a generic sublet. This is the superclass, is the generic sublet, and subclass is the HTTP sublet. Okay, so generic sublet is a protocol independent. So if you write a sublet to process in any protocol, then we are using a generic sublet. If you are writing a HTTP sublet only for HTTP protocol, then we are using for HTTP sublet. And the subclass of HTTP sublets can use do get method, do post method, do put method, do delete method, depends upon the service you want. Now detail about the do get. Do get is like a service method. So therefore it will take two methods, two variables, response, request and response variables. And it will throw two type of exceptions. One is sublet exception, second is IO exception. Now just a basic difference between get and post method.
So when we are sending the data in HTML with the help of get method, it will display all the value in the URL. So it will display the value in the form of name of the variable and value, then and second name of the variable and second value, similarly third variable and third value. Okay. So when we are using the post request, so it will use it body section of the request header to send the data to the sublet. In case of post, your data is secured, it will not display on the URL. Now I am telling about what are the parameters by which you will receive the data from the sublet. तो सबलेट में अगर आपको डेटा रिसीव करना है तो आपको कुछ मेथड यूज करने पड़ेंगे। एक मेथड होता है गेट पैरामीटर नेम्स, यानी जो वेरिएबल्स के नेम हैं उनको रिसीव करने के लिए आपको गेट पैरामीटर नेम्स का यूज करना है। अगर उनकी वैल्यू आपको रिसीव करनी है तो गेट पैरामीटर आपको यूज करना है, ठीक है। अगर आपको एक से ज्यादा वैल्यू को रिसीव करना है देन यू विल यूज गेट पैरामीटर वैल्यूज। I have the practical example of this get parameter also that I will show you. So we have three methods: get parameter names, get parameter and get parameter values. Now एक एग्जाम्पल है कि आप डेटा को कैसे रिसीव करेंगे। सपोज हमने गेट मेथड से सबलेट में रिक्वेस्ट सेंड करी तो इट विल रिसीव एट डू गेट एंड हमें वेरिएबल्स के नेम एक्सेस करने, तो सबसे पहले आप रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ क्रिएट किया है, और उसके बाद आप मेथड यूज करेंगे गेट पैरामीटर वैल्यूज। वहां पे आप नेम देंगे, तो गेट पैरामीटर वैल्यूज से एक से ज्यादा वैल्यूज को रिसीव करता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक अरे यूज किया है जिससे कि एक से ज्यादा की वैल्यू को हम रिसीव कर सकें। ये ऑलरेडी हमने यहाँ पे बताया। थर्ड मेथड है गेट पैरामीटर वैल्यूज, वी आर रिसीविंग द वैल्यूज एंड ऑफ टाइप स्ट्रिंग। देन यहाँ पे हम चेक करेंगे नेम इज नॉट इक्वल टू नल। सो व्हेन वी रिसीव ऑल द पैरामीटर्स, जस्ट फाइंड आउट, यूज द फॉर लूप, names dot length and just display the values. Then data from string. Now very important part, सबलेट से जो भी डेटा आप रिसीव करेंगे सबलेट में वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होता है। अगर आपको कोई मैथमेटिक लगानी है तो आपको डेटा को इंटीजर या डबल फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेंज फ्रॉम स्ट्रिंग टू either in integer, double or byte. So to change from integer to change from string to integer, तो आप यहाँ पे मेथड यूज करेंगे integer, यहाँ पे पैरामीटर को पास करेंगे एंड यूज दिस मेथड init value। तो जो भी आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू वो इंटीजर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम कंसेप्ट फॉर कन्वर्ट इनटू ए डबल फॉर्मेट, सेम फॉर द बाइट, कन्वर्ट ए स्ट्रिंग डेटा इनटू ए बाइट फॉर्मेट, and to convert a boolean data to convert a string into a boolean data, then we are using the boolean method here. Now अगर आपको एक string में से एक character receive करना है, for example starting character, then we are using character at and we are passing the index here 0, so it will return the first character. So till now I discuss about what is the sublet and how to receive the data. I am going to show you the in NetBean to receive the data. ये देखिए इनपुट डेटा है, इसमें हम we are taking the first name, last name and there are 3 check boxes here. Okay, so when we click on the submit button, it will call the sublet read input data. Read input data is already defined under the source package. This is the read input data.java. It is a sublet program. I use the concept of process request in the NetBean. It is similar to the service method of the sublet life cycle. यहाँ पे हमें सबसे पहले डेटा को रिसीव करना है तो आप रिक्वेस्ट यूज करेंगे, उसके बाद गेट पैरामीटर यूज करेंगे, उसके बाद उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम देंगे।
ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स का नाम हमने ऑलरेडी यहाँ दे रखा है। सो नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इज फर्स्ट नेम, और सेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं फर्स्ट नेम। सिमिलरली नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स इज लास्ट नेम, यहाँ पे हमने यूज किया है, यहाँ पे लास्ट नेम हमने यूज किया हुआ। ओके, सो देयर आर 3 check boxes. So 3 check boxes are mentioned here. So there are 3 check boxes. Checkbox, first checkbox name is math, second checkbox name is physics, third checkbox name is chemistry. So you are going to select a subject. This is a simple program. So जब आप इसको सबमिट करेंगे, it will call the Servlet read input data. So to run this program, you will run the HTML file. So this is the HTML file. You can see here I have given name Rajesh Kumar, for example, and we have selected math, physics, chemistry, and submit the button. You can see the name is mentioned Rajesh Kumar, and these options are mentioned whether which has been selected. Okay, so if you change the name, for example, Mukesh Kumar, so the name will be changed. It is receiving the data, and accordingly the name will be changed. So this is the example of how to get the data from the client machine, from the browser. Next, I am going to discuss about session. Session is a very important part in Servlet program. When you are going to make a website based on the Servlet, then it is required, you need to store the data from one page to the other page. Now, the problem of storing the data from one page to the other page is that HTTP itself is not a stateful protocol. It is basically a stateless protocol. Okay, मीनिंग इज जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये डेटा को स्टोर नहीं रखता है. Therefore, we calling as a stateless protocol. So it is programmer responsibility when you are sending the data from one page to other page to save the data somewhere, and this data will be saved in the session. So each request is independent of previous one because of HTTP is a stateless protocol. In some application, it is necessary to save the state information, that is necessary to save the data. अगर आपको डेटा सेव करना है तो Servlet uses the request object में एक मेथड होता है get session. So we call this get session method to create a session. और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेशन है तो वो आपको एग्जिस्टिंग सेशन भी रिटर्न कर देगा. अगर एग्जिस्टिंग सेशन क्रिएटेड नहीं है तो नया सेशन क्रिएट कर देगा. तो अगर आपको डेटा एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाना है तो आपको गेट सेशन यूज करके एक सेशन क्रिएट करना होगा. So get session basically is of type HTTP Servlet request, and this method returns the current session associated with the user, and it will take one argument. So if it is true, so it will return the current session. If the current session is not available, then it will create the session. If it is false, so it will only return the current session. Now, after creating the session, when the session has been created with the help of the get session, it is the responsibility to store the data in the session. It is the developer responsibility. To store the data in the session, we are using the method set attribute. To get the data from the session, we are using the get attribute. To get all the available variables already stored in the session, we are using get attribute names, and to remove any attribute we can use the remove attribute. Now this is a simple program of the session. These are the packages need to be included to create a Servlet program. Name of the Servlet is date Servlet. Now we are using the do get method because we are sending the request with the help of get method. We have two variable request and response as usual. Now to create the session, we are using HTTP session
class and name of the object is HS, and this session is created with the help of request object, and method is get session and its value is true, meaning it will return the current session. If it is not available, it will create the new session. Now this is the statement to just denote that we are sending the data to the client either in text or HTML. Now we have created an object of PW to write something at the client browser with the help of response.getWriter method. Now फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रोग्राम है आपके करंट टाइम को डिस्प्ले करेगा, करंट डेट एंड टाइम, और जब आप इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करेंगे तो लास्ट एक्सेस को वो डिस्प्ले करेगा। लास्ट एक्सेस डिस्प्ले करने के लिए हम डेटा को यानी करंट डेट एंड टाइम को सेशन में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए हमने एक डेट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑफ टाइप डेट, दिस इज ए प्री डिफाइंड क्लास, और उसमें हमने यहाँ पे हमने जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एज्यूम कर रहा है कि एक वेरिएबल ऑलरेडी स्टोर है सेशन में, बिकॉज वी आर रनिंग दिस प्रोग्राम फर्स्ट टाइम, सो नो वेरिएबल इज स्टोर्ड, सो इट विल display null. It will return date equal to null. So this statement will not true. It will back to here. It will create the new date and store in the session. So this is the statement where we are storing the date in a session with the help of set attribute method. Name, whenever we are storing the data in the session, तो आपको एक पेयर में स्टोर करना होगा, उसमें दो वैल्यू होंगी, एक तो हम वेरिएबल का नाम देते हैं और एक हम डेटा देते हैं। डेटा हमारा डेट है, वेरिएबल का नाम हमने डेट नेम दिया है, आप वेरिएबल का नाम यू कैन मेंशन एनीथिंग। नाउ दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम दिस वेरिएबल। नाउ दिस वैल्यू विल बी बाइंडेड विद द वेरिएबल नेम डेट नेम। फिर हमने करंट डेट को डिस्प्ले कर दिया। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो डेट हमने ऑलरेडी स्टोर कर दिया सेशन में। So with the help of this statement, you will receive the date which is already stored. So basically it become a last access, and it will initialize this date object. This time this date object is not null, so it will display the last access date. So whenever you are refreshing it, it will display the last access as well as current time, or you can say last time and current time. First time it will display only the current time. When you are running multiple time, it will display the last time, last access time as well as current time. So running this program. So this is the program is session practice. Program. So this is the program. So we are running this program. You can see we have created the date here and date object, last access and current access. So we are running this program. So it is a first time, so it is displaying current date only. When you refresh it, last access, 4th July, and timing is also mentioned. Again refresh, you can see the timing has been changed. So just make some small duration. So it is changing, this timing is changing, small timing is changing, okay. So it will display the last access also and current date and time also. So with the help, and it is last access only possible because we are storing the data in the session. So same thing is just for your information how this program is run. I am just written in the PPT. When you first request this servlet, the browser display one line with the current date and time information. On subsequent invocation, two lines are displayed. The first line shows the date and time when the servlet was last accessed. Second line shows the current date and time.
So it is just to understand how this program will run. Again, I'm running this program for your understanding purpose. So when you run first time, it will display only current date, and when you refresh it, it will display the last access. So it is displaying 45 minutes, it is seconds. So when you refresh it, you can see the seconds are changing. Last access date is already saved in the session, and current date and time. Okay, thank you very much. I hope you understand this video, and you understand this Servlet basic also. Thank you very much.